So namaskar all of you. तो हमें jurisprudence of constitution के ए पेपर टा ए मॉड्यूल टा हमें स्टार्ट करिवा. तो कॉन्स्टिट्यूशन टा तो हमरो प्रीलिम्स रे भी दरकार और इंटरव्यू रे भी दरकार. jurisprudence बेसिकली जो माने नहीं चंती एटा ऑप्शनल हिसाब रे. ओके, तो ताको पई मेनली एटा दरकार होछ. तो आजिकल आजिरो क्लास रे बेसिकली कोन कोन आपनकर बुक्स आपण फॉलो करिवे आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें सेपरेट मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स रे डिवाइड करके देखिबा कि को टॉपिक रु कि को सब मॉड्यूल रु को क्वेश्चंस हमर आसी छी. ओके, सो सबटू स्टैटिक सब्जेक्ट जदि आपण देखिबे जो थरे कि हमें इजीली गेस करि दे परिबा कि हां एही क्वेश्चन परंतु एही 15टा क्वेश्चन भितरे ही जहा जहा हमर आसीबार अछि. ताहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस आपनकर गोटे एमती पेपर जो थरे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोबेबल क्वेश्चंस रे सैंपल स्पेस रो क्वेश्चन रो सेटा खूब कम. 4-5टा कॉन्स्टिट्यूशन रे तो 5-6टा एरियाज रु ही पड़े आउ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी एबे जतरा में डिस्कस करिवा आपण जानि परिबे कि बहुत लिमिटेड टॉपिक्स रु मते चूज करिवार अछि. ज्यूरिस्प्रूडेंस एज सच जेमती आपण यूनिवर्सिटी रे पढि चंदी सेथरे बहुत गुडे जिंस अछि. किंतु जदि हम लास्ट 10 इयर्स रो क्वेश्चंस देखिबा तो आज हम एनालिसिस करिबा ओडिसा जुडिशियल सर्विस पई ताले आपण देखिबे 4-5टा मेजर टॉपिक्स अछि जोटा कि सबु बेले रिपीट होउछ. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग first let me tell you about the books that you have to follow. Text books आपनकर कोन कोन आपनको फॉलो करिवार अछि. Again text books भितर बहुत प्रकार jurisprudence रो lot of books are there depending on your style of preparation सेटा आपण चूज करिवे केमतिया बुक आपनको दरकार. आपण पढंती केमति केते जण बहुत डिटेल्स रे पढंती. ओके, और तांकू माने पूरा एनालिटिकल टाइप रो टेक्स्ट बुक दरकार थाए. तेनु क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स बहुत अछि जा जा को विषय रे जो जोरिस को विषय रे आपण पढुचंती. सालमन हला, एचएल हार्ट हला, ओके, डायस हला, पैटर्न हला, राइट. सो ओके, डायस को बुक आपण फॉलो कर परिए बट सेटा सु 1920s अराउंड लिखाई. ओके, आउ सेगुडा एमती इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे तो लिखाई जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस आपण एतरे बुझी परिबे. ओके, किंतु कांसेप्ट क्लियर करिया पई बहुत भलो ए बुक सुडा. तापर जदि आपण नोट आकार रे देखिया पे चाहउचंदी, ओके, लाइक क्वेश्चन गोटे देथिबो ता आंसर सेमतिया पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम हिसाब रे मते बहुत अधिका पढिबार नै. एग्जाम रे जेतिके दरकार मु सेतिकी खाली पढी. जदि सेमती आपणकर भाविबार अछि ताहले 2-3टा बुक्स आपण फॉलो कर परिबे. गोटे तो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड आउ क्वेश्चन आंसर फॉर्म रे अछि मोकाल. दिस इज इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म. एटा क्वेश्चन हेले एटा आंसर हो. ओके, नहेले आउ भी आपण फॉलो कर परिबे इंडियन ऑथर्स कर झापाला रो भी भलो ज्यूरिस्प्रूडेंस रो बुक टा. ओके, so that book is also good. आउ भी जदि हमें देखिबा जदि आपण एमती पॉइंट वाइज भी रिक्वायरमेंट अछि किंबा आपण चाहउचंती कि जोडा कि कंसाइज वे रे ताको पढिया पई. ओके, ताले नोट आकार रे ए दीटा मोकाल आउ जावाला इट इज क्वाइट गुड. ओके, आउ इंडियन ऑथर रा पढिया पई चाहउचंती बट टिके एग्जॉस्टिव हेतिबो ताले मणि त्रिपाठी इज आल्सो गुड. any one book you can go through. जो माने खाली only माने एग्जाम ओरिएंटेड पढिबे ओजेएस पई. ओके, जते कम टाइम रे जते अधिका प्रैक्टिस मोकाल
आपन भाई सफिशिएंट माने सी भी देछि सेमति नोट आकार रे आपनकर क्वेश्चन हिसाब रे से देछि ओके नाउ एबे हमें कोन करबा कि लास्ट 10 इयर्स रो क्वेश्चंस यू विल ताको सेगमेंट रे आपन डिवाइड कर देबे आपन देखिबे केते थर रिपीटेशन हेछि ओके तो सेतुरो ही आपन जानि परिबे कि कोटा हमरो इंपोर्टेंट पार्ट्स रहला ओके ऑल्दो जेतले फर्स्ट रीडिंग करिवे फर्स्ट प्रिपरेशन करिवे तो मते सबु सब्जेक्ट्स उडा प्रॉपर देखिबार अछि किंतु ए केस रे ओके जेतले आपण लास्ट 10 इयर्स रो क्वेश्चन एनालिसिस करछंती आपण को क्लियर हे जिवो कि को एरिया जोडा बेसी इंपोर्टेंट तो ता ऊपर आपण अधिका इंपोर्टेंस देबे ओके सो व्हाट यू डू नाउ ऑल ऑफ यू आपण नोट्स निजो पाखे रेडी करंतु तो मु तार गोटे गोटे टॉपिक कहबी आपण से हिसाब रे सेटा लेखि लेखि जिबे ओके सो अकॉर्डिंगली एट द एंड हमर गोटे टेबल टे तयारी हे जिवो कि गोटे स्ट्रक्चर टे तयारी हे जिवो जो थरे हमें जानि परिबा कि कोटा बेसी इंपोर्टेंट अछि ओके so let us start then before that if you have any doubts if you want to ask anything you can ask then we will go for the last 10 years question analysis हला ए जो फाइल टा एटा आपनकर ग्रुप रे मु दे देछि एटा हला 2012 रु 2022 माने जहा ओपीएससी वेबसाइट रे जो क्वेश्चन सुडा अवेलेबल अछि jurisprudence और constitution पूरा ताको गोटे सिंगल फाइल रे हमें रखिछु ओके सो दैट हमको जेटा इजी हबो कौन कौन केमती कौन पड़ी कौन बेसी इंपोर्टेंट अच्छी सेटा जानिया पे राइट सो दिस फाइल यू कैन रेफर और डाउनलोड फ्रॉम योर ग्रुप डाउनलोड कर दे सेटा ओके सो प्लीज ब्रिंग योर नोट्स तो माने ऑनलाइन भी देखु जंदी आपण नोट्स आपणकर ओके रेडी करी के रखंतु एंड मु कहबी जो हिसाब रे तार कॉलम सुडा से हिसाब रे रखिबे एंड देन यू विल start analyzing last 10 years questions okay so 2 minutes me on to just bring your notes and all okay I hope all of you have got it now so now let us start the analysis so केमिति आपण तार segments रखिबे okay first question okay number 1 2 3 4 ना केतेटा क्वेश्चन हम डिस्कस करियो तापरे ईयर को वर्ष पड़ी सब टॉपिक की टॉपिक जहाँ भी अपन तक रखी पारे राइट और तापरे रहला क्वेश्चन टा एक्चुअल क्वेश्चन टा जोटा लिखियो ओके तो फर्स्ट एनालिसिस रे आपण गुडे टॉपिक्स और मॉड्यूल्स पाई जिवे ताकू पुणी हमें टॉपिक वाइज पर सजे दे परियो सपोज स्कूल्स ऑफ लॉ ओके और लीगल थ्योरी तो वंस हमें 10 वर्ष एनालाइज कर देला पर लीगल थ्योरी रे एई वर्ष रे एई पर्टिकुलर क्वेश्चन उडा पडिथिला तो सेटा आपन को क्लियर हे जिवो सो इट बिकम्स इजी फॉर यू जानिया पई कि कोटा बेसी इंपोर्टेंट रहउछ ओके जेतो बेले भी आपण कोनोसी भी रिटन एग्जाम पई प्रिपरेशन स्टार्ट करछंती सेतो बेले लास्ट किछि वर्षर 10 इयर्स तो बहुत एग्जॉस्टिव होउची
एटलीस्ट 5 इयर्स रो क्वेश्चन एमती आपण एनालाइज कर देबे ओके जो भी परीक्षा पे आपण रिटन एग्जाम पे आपण प्रिपेयर करछन ओके सेम जिंसो एबे नेक्स्ट वीक हमें ओएसजेएस एटीजे पे में हमें करिबा ओके जोटा हमें we will start with okay your narcotics act okay से through हमें start करिबा but anyway that we will see later तो एबे जस्ट एई फॉर्मेट रे आपण को खाता रे लिखि दियो question number year topic or module and the actual question hello now let us come to the first question explain the importance of historical school of law in present day context एटा हला 2012 रो हमें देखु हला 2012 रो सो जस्ट आउ एथरे भी जदि आपण देखिबे आपण अलगा सब पेपर्स जोड़ा देखिबे ऑप्शनल्स करिका एठी जदि आपण देखिबे एठी बहुत कम पिला एगुडा नियो जेंति कि ए केस रे ए जो लेखाई छि 500 आ अर्थ हला एई वर्ष 500 टा ए माने प्रिंट करिछन ओके 500 कॉपीज तामान नो कि 500 पिला देथिबे ओके दैट आपण देखिबे नेक्स्ट 100 ओके एडा केबे 2013 रे ओके 100 टा कॉपी माने प्रिंट करथिले सेमती आपण बाकी उडा खाता भी देखि परिबे ओके जल्दी क्राइम्स एंड टॉर्ट हला सेतर बहुत अधिक आइ दियो ओके केते पिला नौचंती सेथुर आपण जान परिबे अगेन 100 तो एमती आपण जान परिबे कि केतेटा क्वेश्चंस आपण को प्रिंट हेची मेंस रे दैट गिव्स यू आईडिया दैट केते पिला नैचंती 150 आ रीजन भी अछि एथरे कम पिला नबार ऑल्दो এই কনসেপ্টটা কে বুঝি নাନ୍ତି कि एथरे सबुठु दिस इज द मोस्ट स्टैटिक पेपर ऑफ ऑल ओजेएस ऑप्शनल्स बाकी जेते पेपर अछि सब डायनामिक पेपर उडा एटा सबुठु स्टैटिक पेपर ओके काहे कि ना एथरे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आसीबार चांसेस बहुत ही कम ठीक अछि आउ गोटे इंशाल्लाह एथरे बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस रो डिफरेंट वेरिएंट्स आसीबो अगेन 100 आउ एटा लेट्स से लास्ट किछि वर्ष रे ही बेसी पॉपुलर हेची स्पेशली जेते बेले आपण को एनएलयू रो स्टूडेंट्स माने ओके काना एटा गोटे मेजर पेपर तांकर तो से माने जेते बेले कंपटीशन को आसिले तांको इतरु बहुत जण एई सब्जेक्ट ता नै कि से माने क्रैक करचंदी 110 हला तरे ओके आ तार आ गोटे कारण भी अछि काहे ना आगु दिन आपण 7-10 वर्ष एमती जदी देखिबे ओजेएस रे ओके जेते बेले मोस्टली हमरो लोकल लॉ ग्रेजुएट्स माने ही से माने नॉन लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स माने बेसी इंटरेस्टेड थिले एथरे 150 ओके तो जहां मेंटरशिप मिलुतिला से माने ऑलरेडी चूज कर देथिले कि हमें एई सब्जेक्ट से मेंटरशिप दोछु तेणु धरंतु मु कॉन्ट्रैक्ट रे इंटरेस्टेड अछि कि कॉन्स्टिट्यूशन रे इंटरेस्टेड अछि ताले मते से रिसोर्सेस उडा मिलिया पे टिके डिफिकल्ट होतला सो बहुत जण ओके ताकू ही देखि कि से माने तांकर सिलेक्ट करथिले राइट 100 कोटा माने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक दिस इज रिलेटिवली लेस बट रिजल्ट्स जदि हमें देखिबा विगत किछि वर्ष रे ताले टॉप रैंकर्स इंक्लूडेड बहुत जण ज्यूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन रखुछन माने टॉप 10 भितरे ओके फॉर एग्जांपल एई वर्षर मु जति कि जानची रैंक 3 रैंक 5 तांकर ज्यूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन थिला ओके गला एटा मु गोटे ओवरऑल पिक्चर टे देली नाउ यू मेक दिस टेबल एटा जो माने नुवा प्रिपरेशन करूचंती आपण जेतले प्रिपरेशन स्टार्ट करबे सब सब्जेक्ट रो एई टाइप रो टेबल बने दे ओके ताले आपण जानि परिबे कोटा बेसी इंपोर्टेंट कोटा कम इंपोर्टेंट सो कम टू क्वेश्चन 1 explain the importance of historical school of law in present day context 2012 तो एटा लिखंतु क्वेश्चन नंबर 1 ईयर हैला 2012 हैला टॉपिक की मॉड्यूल स्कूल्स ऑफ लॉ हैला एमती लिखा हुआ स्कूल्स ऑफ लॉ क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन लिखे दरकार नहीं हिस्टोरिकल स्कूल एतिक लिखा हुआ
Got it? Now come to question 2. Write notes on the following 2 principles of justice evolved by John Rawls. Okay, theory of justice asigala. So question number 2A 2012. Okay, so theory of justice. Okay, Rawls. Okay, Rawls theory of justice. ता विषय से पहुंचो. Then 2B रे comparison of rule of recognition with grand norm. Okay, so again 2B 2012. तो एगुड़ा कौन से schools of law. Okay, legal theory विषय एटा पहुंचो. Just write comparison. Okay, comparison of rule of recognition with grand norm. Hello. तापरे question 3 के असंतु laws and morals. Okay, एटा general jurisprudence under रे जीवो. Principles of jurisprudence. Okay, ethics, laws and morals. Right? ये तीनटा जिनसे ऊपर फोकस अपन करूँगा. So laws and morals. Right? एबे मु जस्ट खाली डिक्टेट करिवि आपण ए हिसाब रे ताको लेखि लेखि जिबे सो दैट बाय द एंड ऑफ आपणकर एनालिसिस आपण जानि परिबे को को पार्ट्स रा इंपोर्टेंट ए टेबल टा आपण बने देबे. ता परे जते बेले आकु हमें एनालाइज करिबा. ओके, मु सेटा एनालिसिस करिवि ग्रुप रे दे देबी. फॉर एग्जांपल स्कूल्स ऑफ लॉ हमें टॉपिक वाइज ता पर रखि दबा. स्कूल्स ऑफ लॉ 2012 रे हिस्टोरिकल स्कूल पढ़थिला, 2013 रे एटा पढ़ला, 2014 रे सेटा पढ़ला, रिपीटेशंस भी हिच. ओके, बट एबे फर्स्ट जते बेले आपण एनालिसिस करिवे एई टाइप रो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपण को एनालाइज करिया पे पड़िबो. सो नंबर 3. नाउ नंबर 4 टेक डाउन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 here hela 2012 discuss the importance of precedent as a source of law. Okay, so sources of law topic ki module re. Okay, mention some circumstances which increase the authority of a precedent. So just kali question re apan likhibe precedent as source of law. Okay, precedent as source of law. Next, number 5. Question number 5, 2012. Rights and duties are jural correlatives. Discuss mentions of characteristics of a legal right. So it are rights and duties under Rejiba. Okay, so rights and duties as jural correlatives. Khali rights and duties set up the characteristics of a legal right we say just khali rights and duties as jural correlatives. Question re apna likhibe. Then come to question number 6, 2012. Question number 6. The term person, define the term person and distinguish between natural and legal person. Mention 2 circumstances in which beasts may be thought to be persons or legal rights. Okay, so just write persons. Okay, types of persons. Seta hela apanଙ୍କର question. Okay, types of persons that you can take down. Excuse me, sir. Sir, से जो number 5 रे rights and duties कहले, sir सेरा तो topic किंबा module rights and duties टा तो गला sir topic किंबा module तो questions रे कौन डा रहियो sir? Question टा मैं exactly लिखिबानी पूरा question टा. एठी से पचाउची
jural correlatives. Okay, माने से माने interdependent on each other, complementary to each other. They are correlatives. Okay, jural correlatives माने in the domain of jurisprudence. Okay, they are correlatives. They are interdependent on each other. Rights and duties. ताको हमें concomitant भी कही परिवे. Rights and duties are concomitant in nature, means they are dependent on each other. Okay, independent no निज to. Right. और तापरे से कोची characteristic of a legal right. So सेटा you don't need to write the entire question. सेटा जेतले आपण previous year question solve करिवे हमें गोटे गोटे करी तो सेतले हमें obviously देखिबा. Okay, so सेथरे just खाली लेखंतु rights and duties as jural correlatives. Okay, question. So एटा 2012 रो गला. एटा जुरिस एटा constitution part टा leave it. सेटा हम constitution जिबा सेतले लिखिबा. Now next come to 2013. So एटा गोटे बहुत ही important exercise. आपण जोटा भी जो भी subject prepare करिवे प्रथमे एई कामटा निश्चित करिवे कि लास्ट 10 वर्ष रो क्वेश्चन रु को चैप्टर रु किंबा को मॉड्यूल रु कोन कोनटा पढिबी. ओके सेटा को आपण को रखवार अछि. ओके so that you have to keep in mind. एई टाइप में सुन मा ताकू देखि देछि एई टाइप रो खाता लाइन पडिथियो बुझ पले. So now come to 2013. 2012 सरला. All of you have made the table. It is very important that you make the table. आपण निजे सेडा करिवाटा बहुत दरकार. ओके ऑलरेडी रेडीमेड अछि ताको आपण बसिकी देखिबे तारो एते बेसी अछि आपण लाभ होबनी. ओके so along with me you have to make the table. Done. 2012 सरला. Now come to 2013. हैला एटा constitution अछि. Next question number 1 or question number 7 year हैला 2013 हैला सेतरे देइथिला प्रथमे jurisprudence और तापर constitution. एथरो दे देछि प्रथम constitution तापर jurisprudence. So number 7 year हैला 2013. Question कोन make a comparison of precedent and legislation as sources of law. हैला देखंतु question repeat हैला. Precedence as source of law 2012 रे भी पढ़थिला 2013 रे भी पढुछि और legislation टा ऐड कर दिछि. Okay, which according to you is the effective source and why? Right. So module की topic रे लिखिबे sources of law और question रे लिखिबे comparison between precedent and legislation as sources of law. Comparison between precedent and legislation as sources of law. Okay, एमिति जदि आपण पांचटा जाक optional रो analysis करि देबे after you make a thorough analysis, okay, logical analysis, it will be very easy to understand that the most static आउ जो सब्जेक्ट सबुटु कम टाइम रे आपण कंप्लीट करि परिबे जोडा गोटा फंडामेंटली बुझिबा सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट सेटा हैला कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस. ओके सो सबु जाक ऑल द 5 ऑप्शनल्स रो एई टाइप रो एनालिसिस निहाती भाबरे करिवे. वी विल डू इट वन बाय वन जतले गोटे गोटे हमें स्टार्ट करिबा. ओके एनीवे गला नंबर 7 2013 sources of law question हैला comparison of precedent and legislation as sources of law. Next question number 8 हैला question number 8 year 2013 evaluate the contribution of HLA Hart to analytical jurisprudence. So 8 आपण again okay the jurists contribution of major jurists तो एटा हमें schools of jurisprudence भी दे परिबा किंबा jurists okay और important jurists topic रे भी दे परिबा. ओके सो आपण ताको जदी jurists कर देले ताले HLA Hart लिखिबे. जदी आपण schools of jurisprudence दोचंदी ताले analytical jurisprudence. ओके सेटा देबे टॉपिक टा आउ क्वेश्चन हला contribution of HLA Hart.
Question number 8. 9 को आसंतु. Examine the concept of rights in its wider sense of the term as propounded by Hoffel. Okay. So एथरे rights आपनकर आसीबो. Okay. Module टा. Our question हला wider sense or wider concept of wider scope of rights as given by Hoffel. Hela. Tapare question number 10, 2013. Who are legal persons? Examine the legal status of dead person and animal. Already repeat heichi last year the question eta. Okay. So take down legal persons or persons, natural or legal. Okay. So persons. Our question re legal persons. Okay. Dead persons and animal. The पचार last year भी beast मानकर. Okay. ताकू हमें legal person हिसाब रे नहीं परिवा कि नहीं. को condition रे नहीं होगा. So repetition next year रे ही repeat हो जाएगा. Okay. Question number 11, 2013. Define property, discuss various kinds of property. पूरा direct question होची. So property. Okay. Module रहेगा property. So types of property. Okay. Definition and kinds of property. Right. Tabare 12, 2013. Question number 12, year 2013. Examine the characteristics of ownership. Add a critical note on difference between ownership and possession. Okay. So it actually property and possession tari under hi ase. Property. Okay. Tapare apna ownership and possession question. Ownership and possession. Possession ta बहुत important sub module ta. ठीक है सब वर्ष आपण गोटे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पाई जिवे पोजीशन ऊपर. ओके वाला एटा 2013 रो. राइट. नाउ कम टू 2014. गोटे जिंस मु क्लियरली कहि देबा पे चाहे ए जो एनालिसिस ता करूछु एटा हम कोन गोटे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रु एनालाइज करूछु. जदि पैटर्न चेंज है कि कौन है एटा भी चेंज हो पारे. तेणु आमे पूरा सिलेबस टा कवर करिबा किंतु ता भितरु कोटा बेसी इंपोर्टेंट अछि जोटा को हम निहाती आ बहुत भलरे जानिबार अछि. जेमति आपण कांसेप्ट डायग्राम करिका करूचंती अलगा सब्जेक्ट्स रे. ओके. प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस वाला देखियो ऐप रे जो देछि सब कांसेप्ट डायग्राम करिया पे सेंट्रल नोड कोन हबो, कनेक्टेड नोड्स कोन हबो, कनेक्टेड नोड संगे जो एरोज गुडा कनेक्टेड अछि सेथरे कोन लिखा हबो, सी जो जिंसटा ताकू प्रॉपर्ली करिया पे कांसेप्चुअली आपन को क्लियर होबा दरकार. ओके. तबरे नेक्स्ट असंतु एटा 2014. सो क्वेश्चन नंबर 7 लेखंतु. 2014 हला ईयर. critically examine the theory of Volkswagen's propounded by Savigny. तो एटा भी आपण jurisprudence किंबा आपण ये रे लिखि परिबे कोन जो माने important jurists. Okay. So सेतरे question हला Volkswagen by Savigny or generally speaking contribution of Savigny. Okay. Question number 7. आउ गोटे जिंस सुविधा एटा नंबर कोन एटा अलगा ऑप्शनल रे भी से ही अछि. You see all of these are 25 markers. ठीक है. तो each question 25 मार्क. 25 मार्क 30 मिनिट मते मिलुछि बिकॉज़ 6टा क्वेश्चन करियर अछि 3 घंटा रे 180 मिनिट एवडा. ओके. सो बहुत टाइम मते मिलु पूरा भलो रे एक्सप्लेन करता. अराउंड 6-7 पेजेस लिखि की गोटे 2 पेज मो डायग्राम नहीं जीवो. ओके. तो 7-8 पेजेस मो लिखि पारि. पेजेस इंपोर्टेंट हो जहां से पचाउछि सेटा मु ठीक कांसेप्ट रे लिखि पाउछि कि नहीं. ओके. सपोज दीटा पिला अछंदी दी जण सेम जिंस पढि चंदी नॉलेज बेस भी सेम अछि बट जणे गप लिखला भलिया बहुत बड़ जिंस लिखिछन सब पॉइंट्स अछि बट से गोटे बही रे जेंति पुराना कालिया जेंति से आपण मु कहली प्रथम रे जो दीटा बही अछि
डैश टा फॉलो करंतु पूरा क्लासिकल बुक जोटा किंबा आपण ओके अदर बुक्स नोट वाइज बुक्स फॉलो कर परिए से डैश रे जेमति लिखि छी सेटा कॉन्सेप्चुअली बुझिया पई बहुत बढ़िया पैराग्राफ फॉर्म रे बट प्रेजेंट करिया पई परीक्षा रे सेटा मोटर भल न सेमिति लिखिले कोन ना फर्स्ट सेति पेशेंस नथिबो आपण सब ठीक लिखि किंतु मार्क टा ठीक रे आसीबो ओके सो नाउ so seventh now take question number 8 2014 write an essay on revival of natural law theory in the 20th century with special reference to view of okay Stamler right so heading arrow debe schools or theories of law okay revival of natural law theory okay WRT with respect to Stamler with respect to Stamler सेटा हला आपनकर question okay question number 8 question number 9 2014 discuss the characteristic features of sociological school of jurisprudence तो topic hoba schools or schools of jurisprudence schools of law okay ଆଉ question रे sociological school तापरे question number 10 2014 possession is the prima facie evidence of ownership एटा बहुत different ways रे same question 10 वर्ष सारा repeat हेतिबो ओके तो एटा important एटा गोटे sure पड़े तेनु पिला बहुत भलो रे एटा प्रिपेयर करके रखतन with all the diagrams and illustrations case laws were required एटी गोटे important जिंस देखिबे जेंति हमें पूरा स्पेसिफिक स्टैट्यूट गुड़ा पढुचु बीएसए एबे पढुचु तो तार हमें जानिचु important case law अछि जेतले jurisprudence रे हमें case laws दबु majorly they are English case laws with recent जोटा हमें evolution of jurisprudence in India से थ्रू भी हमें गोट दिटा दे पार ओके सेटा भी माइंड रखियो majorly it will be English laws possession is prima facie evidence of ownership तो एटा property की possession रे अपन लिखिए possession and ownership okay so question रे just write the statement possession is prima facie evidence of ownership next question 11 2014 discuss different theories of punishment which theory of punishment do you regard as the best theory and why give reasons for your answer hela 25 mark per question so take down theories of punishment or penal theories okay theories of punishment ଆପଣଙ୍କର chapter किंबा module ର ନା okay ସେଠି ତାପରେ ସିଏ ଆଉ କହୁନି କି you know which one I write about this theory ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ okay so ଏଇଟା କଣ ସିଧା ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା ଗୋଟେ comparative analysis 25 ମାର୍କ क्वेश्चन ना इनिशियल ଗୋଟେ comparative analysis ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ ओके ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ରଖିବେ ତାପରେ so ସେଇଟା क्वेश्चन ରେ कौन लेखा हबो comparative analysis of various theories of punishment ता भितरु आपण तापर देखिबे कि कोटा सबटु बेस्ट हो काई हैला क्वेश्चन नंबर 12 एटा फुनी रिपीट हैला क्वेश्चन टा 13 रे हितला 12 रे हितला in different forms rights and duties 14 रे भी होची okay so question number 12 2014 rights and duties are co-extensive concomitant complementary जहाँ भी आपण तको कहि पारे rights and duties are co-extensive so एटा subject रहबो rights and duties okay out question रहबो rights and duties are co-extensive so it is just repetition अपन जदी 2012 रो क्वेश्चन टा कर देले ता माने दी तीनटा क्वेश्चन तो एमती अछि जोडा रिपीट हेची 2 वर्ष जाको कंटीन्यूअस ओके अलगा पेपर्स रे गोटे साइकिल ऑफ रिपीटेशन थाए 2 वर्ष रे थरे क्वेश्चन टा रिपीट होची 3 वर्ष रे थरे क्वेश्चन टा रिपीट होची एठी किंतु किछटा क्वेश्चन आपण देखिबे सेटा ऑलमोस्ट सब वर्ष रिपीट होची ओके राइट्स ड्यूटीज गोटे गला तापरे पोजेशन गोटे गला
एटा डिफरेंट फॉर्म रे सब वर्ष पड़िबो. Done for 2014. Now come to 2015. Question number 7. It is said that year hela 2015. Question number 7, 2015. It is said that rights are legally protected interests. Discuss. Are there things such as natural rights? Explain. Okay. So rights chapter rate jiba. Okay. Rights are legally protected interests. Question just you can take down. Rights as legally protected interests. जदि आपको किसी असुविधा नहीं ताले पूरा क्वेश्चन टा लिखि देला औरी भलो. Next, question number 8, 2014 or 2015, sorry. Explain Pound's theory of social engineering with help of illustrations. Illustrations, okay, more than one upon the varoj. Preferably 3. Inter round upon the varoj. Okay, so theory of or theories, legal theories, jota apna koibe. Our theory of social engineering by Pound. Question. Next, question number 9, 2015. Question number 9. State the shortcomings in the definition of law given by Austin. How far Hart has been able to remove them in his own definition of law? Discuss. So, it a heading the definition of law. Okay. How question the likhibe Austin versus Hart. Austin versus Hart. How they have defined law. 25 mark question. तेणु सेमानकर characteristics की ingredients of law की features of law कौन सेमाने जा कहिचंदी सेगुडा भी हम देखिबा. Okay, question 9, 2015. Now question 10, 2015. Chapter किंबा module लिखंतु laws, ethics and moral. Now question लिखंतु differentiate between law and moral. Okay. तापर second part भी अछि. Different the views of jurists of natural law school and positivist school about relation between law and morals. So next part लिखंतु question now. Natural school versus positivist school on laws and morals. Okay. Now come to question 11. Explain the characteristics of ownership and also discuss its different kinds. Question number 11, 2015. Okay. 2015, question 11. So it is property, ownership and possession. Same module ru asibo. Our question is characteristics of ownership, characteristics and kinds of ownership. Characteristics and kinds of ownership. Tapare question 12.
2015. Briefly discuss the various theories of legal personality. What is the position of an unborn child in this legal? So legal personality, जो legal persons हमें देखते हैं, legal person, natural person, okay. So chapter है legal person. Our question है theories of legal personality, okay, comma position of unborn child. এটা গলা 2015. Next, come to 2016. Question 7. Explain what do you mean by right-duty relationship? What is peculiar in right-duty relationship in human rights? So ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ concomitant in nature, coextensive in nature, rights and duties, ସେଟା author repeat ହେଇଛି. ଏଇଠି ଅବଶ୍ୟ human rights aspect ଟା ପଚାରୁଛି. So take down question 7, 2016. Okay, rights and duties module. Rights, question लिखो rights duty relationship with respect to human rights. With respect to WRT human rights. Okay. Next, question 8 टा देखो. The natural law theories reflect a perpetual quest for absolute justice. Elucidate. So, legal theories की theories of law सेटा हबो आपनकर module आउ just question रे natural theory of law. Then question 9. Possession is 9/10 of ownership. Discuss. So again देखो possession, ownership a question टा, rights and duties a question टा, सबु वर्ष repeat होची. So property, possession and ownership module. Our question है just write the same thing. Okay. Possession is 9/10 of ownership. A same question भी आउ 2-3 थर repeat होची. आपण 2022 पर्यंत analyze कले देखिबे. Next question number 10, 2016 रो. The concept of personality is wider than the concept of humanity. Okay. Discuss, differentiate between the realist theory and fiction's theory of corporate personality. So, जोटा की theory of legal personalities हमें देखिलु last year रो question भी देइथिला. तो module दियंतु theory of, okay, or theory of personality, okay, legal personality, natural persons, सब उसी तरह से. Question है under question either देखो जदि आपण को किसी problem नहीं ताले पूरा question टा भी लिखि दे परिबे न जदि short रे लिखु जंदी. Okay, just write concept of personality dash wider than concept of humanity. Okay, comma, differentiate realist or realist theory versus fiction's theory of corporate personality.
Okay. Tapare, next, question 11. International law is the vanishing point of jurisprudence. Explain. Okay. So, it a general jurisprudence part. International law is vanishing point of jurisprudence. Exactly same tahi lekhibe question mein. Module, you can write either general jurisprudence or international law. Tapare, question 12. The movement of progressive societies. Excuse me, sir. हाँ. Sir, sorry to interrupt, sir. टिक्के से 11th question में टिक्के international law sir टिक्के out में कोई international law की general jurisprudence जोटा भी लिख पारे. Okay, sir. अब sir question टा exactly यही रहेगा. कहना एटा गोटे this is an attack or it is a kind of a comment ताकू आपन को explain करिया पड़िबा. Basically माने हला कोन ना international law uniform नो. So it is the vanishing point of jurisprudence. Okay, गोटे jurisdiction रे कोन ताको law थिबो सेटा आ गोटे जगह रे न चली पारे. ठीक है. So it is the vanishing point of jurisprudence. International law. Yes, sir. Yes, sir. The movement of progressive societies. So question 12, 2016. The movement of progressive societies has hereto been a movement from status to contract. Progressive societies. In light of this observation, discuss the contribution of men. Okay. So, it is legal theories under the. Okay. So, contribution of men. Contribution of men. Okay. Legal theories under it. Question over contribution of men. Next, 2017 question. The term natural law has been variously applied by different people. The term natural law has been variously applied by different people at different time. By different people at different time. Narrate in brief and point out its social relevance. Okay. So, natural law कौन तारा characteristic कौन आउ ता ऊपरे जो natural school अछि. Okay. तारा जो major contributors माने से माने different time रे कौन कौन कहछन. So, heading दियंतु schools of law. आउ question रे evolution of natural law. You go to the different people at different time related to natural law. You just have to write the evolution of natural law. ये को कालखंड रे किए कोन कहिसंती जो माने jurist माने सब थिले कि जो माने protagonist से टाइम रा natural law रा से माने कोन कहिसं. Narrate in brief and point out its social relevance. तो first तो हला सेटा evolution टा ताको कॉमा मारी के लिखंतु and social relevance. माने से टाइम रे जते बेले जणे नेचुरल लॉ ऊपर तांकर ओपिनियन देइचंती से टाइम रे सोसाइटी संगरे कोन रिलेशन तार थिला. So it's social relevance. Number 7. Number 8 को जानतु 2017 रा. Okay, we are doing 2017 I guess. हाँ 2017 number 8. Write a note on nature and importance of legal possession. So it is property ownership possession module re jibo. Our question about importance, nature and importance of legal possession. Nature and importance of legal possession.
तापरे question 9 2017, the concept of positivism has seen changes with John Austin and HLA Hart. Elaborate. Okay, so eta hela apanଙ୍କର theories of law, legal theories. Okay, question hela positivism, okay, dash contributions of Austin and Hart. Contributions of Austin and Hart. ଆଉ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ଅଷ୍ଟିନ କର ଆଉ ହାର୍ଟ କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରେ ଓକେ ପଜିଟିଭ ସ୍କୁଲ କୁ କଣଟା ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ସେଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଓକେ क्वेश्चन 10 write a note on theories of the nature of legal person okay theories of nature of legal person already thare padi sarichu so legal persons or legal personality under re chapter ki module under re theories of okay legal persons सेटा आपन लिखिबार अछि क्वेश्चन हला theories of legal person okay so that theory of nature of legal persons suppose तापरे question 11 एटा भी legal theory रो question 2017 question 11 legal theory is the module name pure theory of law ठीक है question हला pure theory of law question number 12 2017 according to Pound the sociological jurisprudence ensures that the making interpretation and application of law take account of social facts explain so eta bi apanଙ୍କର schools of law okay under re apan like ye kari paribe theories of law under re bi kari paribe how question hela sociological jurisprudence with respect to Pound so 2017 पर्यंत आमे डिस्कस कर सरचो you can just go through it केते गुडे क्वेश्चंस अपन देखंतु सब थरो रिपीट होछ in short rights and duties property ownership and possession ए क्वेश्चन ता आउ डिफरेंट स्कूल्स आपनकर सेगुडा सब बेले तो रिपीट होनी और दी थरो कि तीन थरो हमें देखलुनी आ भितरे ओके जदी पाउंड करो दी थरो पडची दी थरो कि तीन थरो तांकर कंट्रीब्यूशन ता ओके सो सेथुर आपण गोटे ओवरऑल आईडिया हे जीवनी 2017 रो पर्यंत क्वेश्चन देखला को 12 13 14 15 16 and 17 6 years रा कि कोटा इंपोर्टेंट पार्ट अछि ओके आउ आपण गोटे देखुचंदी कि कंटीन्यूअसली किछिटा मॉड्यूल्स रु सेम क्वेश्चन पढी चली ओके तो दैट मींस सेगुडा आपण को बहुत भलो रे प्रिपेयर करिवार अछि excuse me sir sir jurisprudence और constitution जोटा सर आपण कहले बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट ता इवन रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत होची किंतु सर जेहेतु सर इवन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट हैला भी सब प्राय 25 मार्क रो क्वेश्चन जेहेतु पढुची तो मु सर आई गेस ता माने सी जे भी सर करेक्शन करिवो सी मते माने ता माइंड रे एया थिबो जे सर क्लैरिटी ऑफ कांसेप्ट केते अछि जे की अटेंड करिछि से पेपर ता तो सिया ही देखिबे आई गेस सर हां एटा आउ तारो भी हमें एते कॉन्स्टिट्यूशन को देखिबा एते तो जूरिस्प्रुडेंस रे तो ताको एबे जदी आपण सेकंड फेज एनालिसिस करबा एतिकिटा पार्ट्स रु क्वेश्चंस आसुची कॉन्स्टिट्यूशन रो हाथ रे आपण गणी देबे कॉन्स्टिट्यूशन रे दीटा क्वेश्चन निहाती बाबरे आसीबो पार्ट 3 रु हैला फंडामेंटल राइट्स रु दीटा क्वेश्चन निया मते तो तीनटा क्वेश्चन करियार अछि ना गोटे क्वेश्चन आसीबो बेसिक आपणकर जो डॉक्ट्रिन ओके ता ऊपर आसीबो किंबा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किंबा सम अदर एसोसिएटेड डॉक्ट्रिन जोडा कलरेबल लेजिस्लेशन हेगला कोन हला किंतु बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर आसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ओके
आउ फंडामेंटल ड्यूटीज दीटा को मिसे देले ता ऊपर केबे केबे गोटे आसी पारे ओके आउ एई जो मु कहली फंडामेंटल राइट्स रिलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा ता ऊपर भी अलग एप्लीकेटिव क्वेश्चन आसे ओके खाली जदी पार्ट 3 टा आपण प्रॉपर्ली टिके माने इवन आमे जो क्लासेस टा करबा ये पई हमहु खाली पार्ट 3 दी मास लागिवो काइना पार्ट 3 टा ही मु कुए पार्ट 3 पार्ट 4 आउ पार्ट 4A एत्ती की आपण को एमपीजीएन रो करिया पे पड़िबो बाकी जो गुडा हला फॉर एग्जांपल जुडिशियल important questions about judiciary okay judicial processes आउ parliamentary processes important but parliamentary privilege करिका पड़ची किछिटा वर्ष रे से गुडा आपण लक्ष्मीकांत की गोटे छोटा शुक्ला की गोटे बहिरु आपण पढ़ी दे पारिबे किंतु पार्ट 3 has to be studied from MPGN पूरा डिटेल्स रे पढ़ियार अछि आ बाहर हो किछि क्वेश्चन नै आ मे बी को गोटे बहुत इंपोर्टेंट केस लॉ आपण को पचारिबो कॉन्स्टिट्यूशनल केस ओके that is it तेणु constitution or jurisprudence the scope of questions coming from outside this is very chances are very low और जेतु मते ओनली 50% ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिवार अछि मु जदी पार्ट 3 भलरे पढि कि जाउची मु तीनटा क्वेश्चन पार्ट 3 रु भी अटेम्प्ट कर दे पारि ओके सर इतने एनालिटिकल क्वेश्चंस नथिबो कि सर हमर तो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन तो सेमति आसनो तो सर एनालिटिकल पढिले भी इट कैन नॉट बी ए प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन लाइक यू विल गेट इन प्रॉपर्टी or like you will get in let's say personal law okay or like you will get in contract like you will get in crime and tort okay X is accused of murder he does this that tale kon hobo decide से टाइप रो jurisprudence रे सेमिति क्वेश्चन केमिति देबे कॉन्स्टिट्यूशन रे सेमिति क्वेश्चन केमिति देबे कुछ पर्यंत तो स्टैटिक जो मन को माने एते सरप्राइजेस भल लागे नी क्वेश्चन पेपर रे परीक्षा रे तांको पई एटा बेस्ट सब्जेक्ट आ गोटे कथा हला कि जहाँ भी हेले कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको डिटेल्स से जानियार अछि जेतु more and more it is being asked in the interview stage irrespective of whether you have taken it as an optional or not बहुत पिला डरी कि आगु नो नथिले आरो रिजल्ट भलो होबनी विगत 3-4 वर्ष रे उठे कि देखंतु रिजल्ट सबु जाको पांचटा पेपर्स रो प्रॉपर थाए सेमति किछ नै ए पेपर बहुत अधिका एती कथा ड्यू टू कंडीशनिंग एंड ड्यू टू लास्ट किछि वर्ष हमें 10-15 वर्ष हैला जो माने मेंटरशिप दउचंती किबा इवन हम यूनिवर्सिटीज भी रिस्पांसिबल तबे मैक्सिमम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज रे यू विल नॉट हैव ए स्पेशल पेपर ऑफ jurisprudence and constitution jurisprudence जानतो constitution of India ओके जत्ते सब हमर मेजर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज थिला एबे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आसला परे दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेपर्स और फेवरेट पेपर्स सोडा सब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज रे सेटा अवेलेबल अछि तो सेही प्रेशर रे हमर एबे जो नुआ स्ट्रक्चर हिच हमर यूनिवर्सिटीज रो इटी ओडिसा रे कि लॉ कॉलेजेस रो बहुत जगह रे देलेनी सेटा किंतु 10-15 वर्ष आगुरु कि 7-8 वर्ष आगुरु से जिनसडा नथिला ओके पिला जे भी प्रिपेयर करिवो से त या देखिबो ना कि मते रिसोर्स कोनटा मिलुची मते जदी के गाइड करिया रही नहीं कि रिसोर्स दवा रही नहीं जे गाइड करचोंती सिया आमो पई चूज कर दैचंती एई तीनटा ही नियो तले पिला पई तो सब जिंस गटे सेम जिंस सेटा मु जेतले प्रथम प्रिपरेशन स्टार्ट करूची मु तो ब्लैंक स्लेट भलिया ओके अनलेस कि हां मु निजे माइंड मेकअप करके जाइची मु ए ऑप्शनटा नेबी जोटा कि हार्डली 5% पिला कि 10% पिला थिबे बाकी जो माने जा तांको जोटू मेंटरशिप मिलला से माने जा तांको कोंती से माने नॉर्मली सेही नहीं होती काहे ना इट इज लाइक से पांचटा जगह हम पई सेम हमें जोटा बेटर गाइडेंस मिलला हमें सेटा पढलु ठीक है तो तांको पई एटा मैटर करिवो बट एम्पिरिकल डेटा जदी देखिबे मींस एक्चुअल फैक्ट्स लास्ट 2-3 इयर्स रे बहुत भलो रिजल्ट ओके जस्ट लाइक एनी अदर ऑप्शनल ए ऑप्शनल रे भी रिजल्ट्स भलो अछि ओके ऑफ कोर्स जदी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भितरु पढिबो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बडो किंतु फॉर्चूनेटली ओजेएस रो पैटर्न रे मात्र 5-6 टा क्वेश्चन जदी मु ठीक रे जानली 3टा क्वेश्चन मु आराम रे करिकि आसी मु कहले किछि नै आपण पार्ट 3 टा जदी भल रे आपण देखि दउचंती आपण आउ किछ दरकार ओके but anyway that we will see so any other doubts or we will continue with the analysis question 2018 रो पेपर ता देखिवा 18 19 20 I guess 20 रो नथिला जो 20 रो सेटा 21 22 आउ 4 वर्ष रो पेपर्स रहला
So come to 2018, question number 7. Law is command of sovereign containing a common rule of life for his subjects and obliging them to obedience. Discuss. Question 7, 2018 lekhandu. Definition of law. Definition of law. Here are the foundations, the fundamentals of jurisprudence. Definition of law. Okay. Law as command of sovereign. Law as command of sovereign. Question law as command of sovereign. Question 8. Write an essay on the authority of precedents as a source of law. Chapter की module है source of law. Okay, already हमें precedents और legislation देखी सारछु, so it a repeat question. Precedents authority of the authority छाड़ो, precedents as source of law. Precedents as source of law. Question है precedents as source of law. तापरे question 9. So legal theory रो आसिला एटा 2018 रो explains Kelson's theory of pure law. Pure law एटा third time पढ़ी ठीक अछि आउ indirectly भी पढ़थिला right. Question रे just write Kelson's theory of pure law. Question 10, 2018. What do you mean by ownership? Elaborates its essential elements, how it is acquired. Already thora padi sarchu ownership. So chapter ela property, ownership and possession. Question ela ownership, essential elements, modes of acquisition. Ownership, essential elements, modes of acquisition. Question number 11. Discuss the importance of precedent as source of law. It a fourth time repeat hela. Fourth time repeat hela. Okay. Discuss the importance of precedent as source of law. Comment upon the applicability of doctrine of precedent in India. Eta bolo generally jurisprudence re Indian specific questions try पड़े. एते हमें जो देखिलु एपर्यंत गोटे खाली मझिरे राइट्स रे पड़िथिला किछि गोटे एटा सेकंड टाइम से पकोछ India specific. Supreme Court bound by its own decision. Okay, तो एथरे कोन ना हमर टिके constitutional aspect भी आपण ऐड करिवे. So ये रे लेखंतु chapter की module रे sources of law, precedent as source of law with respect to Indian context. Question रे with respect to Indian context. मु काई की क्वेश्चन टाको टिके शॉर्ट कर दोची सो दैट लेखिया पे टेबल रे सुविधा हो नहले आपण सीधा कॉपी पेस्ट कर पारे पूरा एग्जैक्ट जदी आपण क्वेश्चन लिखुछन त आउरी भलो हैला 2018 क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट सेकंड टाइम रिपीट हैला थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट सो पेनल थ्योरीज किबा थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट चैप्टर ओके सो सेटा ही क्वेश्चन डिस्कस द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट एटा गला 2018 2019 क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 7 again repetition पूरा exact same question. International law is the vanishing point of jurisprudence. Explain. International law is the vanishing point of jurisprudence. Explain. International law is the vanishing point of jurisprudence. So it international law की general jurisprudence होगा. Okay. How exactly same insert लिखिबे complete just खाली copy paste. Okay. Second time repetition है लाइट. Question में just write down the statement. International law is vanishing point of jurisprudence. Next, social engineering again. Fourth time पढ़ुची social engineering. Law is a social engineering. Explain this with certain illustrations. See पच्चारुनी, but then you have to add the jurists. जो माने की social engineering theories रे कहचन. Okay. So legal theory की schools of law जो तरह भी अपन लिख परिवे. Social engineering with illustrations. Question है ला social engineering with illustrations.
Next, custom is to society what law is to state. Elucidate. Explain the requisites of a legal custom. So, heading lekhundu, chapter lekhundu, module lekhundu, law and customs. Here are basic foundations of law. Law and customs. Okay. Our question में just lekhundu legal customs. Eta apna Hindu law re bhi padhichandi. Okay, what is a valid custom and all? More or less same jinsa type. Explain the requisites of a legal custom. Tapare question 10 को asandu. Explain the concept of legal right. Also mention the essential elements of legal rights. So chapters asila rights and duties. Okay. Our question ella legal rights dash essential elements. Question ella legal rights dash essential elements. Question 11. Examine the concept of possession and ownership. Also explain the difference between possession and ownership. It is ସବୁ ବର୍ଷ ପଢୁଛି, but particularly এই question ଟା second time repeat ହେଇଛି. Difference between possession and ownership. So chapter ହେଲା possession, property possession and ownership. Our question ହେଲା possession and ownership dash differences. Question 12. Liability. Okay. Liability chapters. So vicarious liability dash of the state. First chala vicarious liability, general provisions soda bujhebe. Tapare vicarious liability of the state. So that is basically your 2019. Now come to 2021. 20 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେଟା 20 ର ସେବେ ଇୟର ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ସେଟା କୋଭିଡ ପିରିୟଡ ଟା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 21 as per 20 ର ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ क्वेश्चन ନାହିଁ 21 question number 7 Australian theory of law is more dictatorial than being democratic. Comment. So legal theories की schools of law जहाँ भी अपन तरह heading देवे topic or module our question है ला exactly जोड़ी comment दिए थी बस इटी exact statement टा लिखी थी Australian theory of law is more dictatorial than being democratic. Very rigid. Okay, that you will study. Voilà. Tabare question 8 2021 discuss the characteristic features of historical school. थरे पढ़िथिला आगे हम देखु natural school रो historical school रो एटा second time पढुची historical school. So schools of law question रे historical school. Then question 9 2021 explain different concepts of legal right. Explain different concepts of legal right. Okay, so rights and duties. Our question over concepts of legal right. Characteristics of legal right, scope of legal right, concepts mane illustrations kichita pon debe. Okay, question 10 discuss the view that though possession is very near to ownership yet it is not ownership. Okay, so that means kaun se kochi differentiate between possession and ownership. Hala. So topic hela or module hela property, ownership and possession. सीधा हला difference between possession and ownership बहुत तरह पढ़ी सकते हैं ताकू खाली wording टा तारा change है. Okay. How can you react on the statement that natural law school is of less importance in modern age
despite having its everlasting character. So question 11, 2021. Okay. Schools of law, natural school of law. Okay. Relevance of natural school of law in today's world. Okay. Kaiki kami jauchi. Seda se pocho. So relevance of natural school of law in today's world. Question 12, 2021. What do you mean by term source of law? Discuss the place of custom as a source of law. So legislation or precedent already both thara padichi. Custom bhi thare padithila. Ebe second time pad. Okay. So ଆପଣଙ୍କର ମଡ୍ୟୁଲ ରହିବ କି ଚାପ୍ଟର ନେମ୍ ରହିବ source of law ଆଉ ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରଖିବେ custom as source of law. Custom as source of law. Last year মানে গত বর্ষর क्वेश्चन 2022 ର So 2022 question 7. Discuss Austin's theory of law and point out the limitation of his theory. Repeat hela. Okay, 2021 report thila Austinian theory ta basi strict, draconian, autocratic as compared to democratic. ठीक है. Phone again Austin का theory पढ़. So theory, legal theory की schools of law जहाँ भी अपन लिख करीबे legal theory under रे Austin's theory. Okay. So characteristics of limitation. Austin's theory dash characteristics and limitations. Question 8. What are jural postulates? Discuss the social engineering theory of law propounded by Roscoe Pound. So it is fourth time Pound's theory पढ़छु. Okay. Heading hela legal theories. Okay. Social engineering Pound. Question रे just खाली लिखंतु social engineering Pound. So jural postulates obviously तारा कौन लिखिए आपण. What are jural postulates? Characteristics of jural postulates. Illustrations of jural postulates. Okay. Question number 9. What do you understand by precedent? While explaining different kinds of precedent, evaluate the merits and demerits of precedent as source of law. Again, fifth time repeat hoji precedent as source of law. So module की chapter name होगा sources of law. इतने टिके अधिका पहुंच. Question कौन होगा? Precedent as source of law, kinds of precedent, merits and demerits of precedent as source of law. Okay. Question 10. Explain the famous dictum of Henry Mann that the movement of progressive societies has been a movement from status to contract. Already exactly same inside thora pad sarchi. It is second time repeated. Okay. So legal theories or schools of law. Okay. Question hela contribution of men. Next, question 11, 2022. What do you understand by the term liability? The liability thora padthila. Okay, vicarious liability of the state. Okay. While enumerating various kinds of liabilities, differentiate between civil and criminal liabilities. So first hela eta chapter jiba liability, types of liability, difference between civil and criminal liability. Eta question ne likhibe tinta part. Okay. Liability, types of liability, how difference between civil and criminal liability. Next, question 12. Possession is the evidence of ownership unless contrary is proved. While commenting on this statement, define possession and enumerate its kind. So heading kimba chapter hela property, possession and ownership. Okay. Our question hela
possession is evidence of ownership. Okay, plus types of possession. Okay, definition and types of possession. So ये question टा सबु थोड़ा different forms से repeat है सबु वर्ष. Okay, so this is the analysis of last 10 years question, last 10 वर्ष question रो इटा analysis. हाँ आ गोटे भी जिनस आमे देखिबा मु जो कथटा कहतली सब वर्ष आमे देखिलु 100 टा प्रिंट होची 150 टा प्रिंट होची लास्ट ईयर 120 अराउंड प्रिंट हेतला. ओके माने जो रिजल्ट जोटा बाहर आ सेतरे बहुत भलो रिजल्ट हला. ओके एनीवे से के केते नौची केते पिला नियंती कि के यू नो दैट इज इमटेरियल मार्क्स भलो आसे सब ऑप्शनल भलिया. ओके एमती नै कि हां जेतु मैक्सिमम पिला गोटे सेट ऑफ ऑप्शनल नियंती सेटा टिके जणा पड़े कि सेतुरु बेसी पिला पाउछन काना एटा बेसी पिला नियंती. ओके बट jurisprudence and constitution advantages और disadvantages मु कहि दोची. एडवांटेज हला सबुटु स्टैटिक पार्ट हला इटा एथरे बेसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आसीबार संभावना नाही. इट इज मोर ऑफ थ्योरी एंड एनालिसिस. तेणु जे कांसेप्ट थरे बुझी गले तांको पई ए सब्जेक्ट बहुत भलो. ओके बहुत कम समय रे आपण ताको कवर करि परिबे. बुझ पाउछन. So these are the things which you have to keep in mind. Okay, these are the things which you have to keep in mind. Okay, while choosing this subject. How बहुत गुडे आपण को resources open source रे भी available अछि. Telegram रे हैला YouTube रे हैला तो जने self study करी कि भी ए सब्जेक्ट ऊपर भलो कमांड पाई कि बहुत भलो मार्क्स आनी पारी. Okay, 90 plus out of 150 with self study also you can do it. Again I will refer to the books. So a structure re question number year topic की module और question एटा में टेबल आपण बनै सकथिबे. एपे कोन करिवे ना ताको चैप्टर वाइज किबा मॉड्यूल वाइज कन्वर्ट कर दे. तो प्रथमे स्टार्ट हला डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड बेसिक्स ऑफ लॉ. ता जरु केतेटा क्वेश्चन पढिछि को वर्ष पढिछि ताले जणा पडछि मते कि हां ताले ए क्वेश्चंस रा बेसी इंपोर्टेंट. तेणु जेतेबेले मो सब्जेक्ट ता पढुछि मो माइंड रे स्ट्राइक करिवो हां एगुडा 3-4 थरा पढिछि. ओके बहुत जण एमती करंती किछि नै हमें 10 वर्ष सॉल्व कर दी पळेबु सेटा गोटे बहुत ही डेंजरस और रिस्की ओके जिंसो करिया पई. बट बहुत टाइम रे काम करछे काहे कि ना कथटा हला कोन मु जदी 10 वर्ष रो सब क्वेश्चन करि कि जाईछि मते सेठी मात्र 3टा क्वेश्चन करियार अछि ज्यूरिस्प्रुडेंस. ओके तो एते गुडे क्वेश्चन मु करि कि अछि 3टा कोन जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट होबनी 3 रो अधिक रिपीट होबो. ओके तेणु सेटा हे जे बट सपोज पैटर्न चेंज कर देले एमिति जगह रु क्वेश्चन पचरले जोगुडा आगुरु पडिन ताले कोन करियो सेति पई टेक्स्ट बुक ता सारिबा निहाती दर. ओके तो एटा हला आपण केमिति टेबल टा बनेबे और जो बुक्स कहली डिपेंडिंग ऑन आपण केमिति पाठटा पढुचंती. जदि आपण इन डेप्थ पढिया पई चाहिबे और सब कांसेप्ट बुझिया पई चाहिबे ताले कोटे गोटे क्लासिकल टेक्स्ट बुक आपण पढिबे. क्लासिक टेक्स्ट बुक क्लासिक्स कोचु जेमति कि पैटर्न रहला कि डायस रो सालमन रो एचएल हार्ट करो. डायस इज गुड दैट यू कैन फॉलो. जदि मते पिन पॉइंटेड खाली एग्जाम पई मते बुक्स दरकार क्वेश्चन दिया हितबो आंसर दिया हितबो ताले ज्यूरिस्प्रुडेंस पई मोकाल इज गुड. अदर्स झाप वाला भी आपण चाहिले सेटा भी फॉलो कर परिबे. ओके आउ जदि टिके एनालिटिकल बुक पढिबे किंतु इंडियन ऑथर रो जोतर कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी दिया हिची ताले मणि त्रिपाठी इज आल्सो गुड. एनी वन बुक यू चूज. ओके डिपेंडिंग ऑन योर स्टाइल ऑफ रीडिंग. बुझ पाले. So that is the analysis of jurisprudence part. Okay, last 10 years of question raw. So tomorrow we will start okay with the theoretical aspects of jurisprudence. ठीक है. Any doubts, anything you would like to ask, then you can ask me. Else we will stop. सर जदि सर एटा तो आपण सर रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेंस पॉइंट ऑफ व्यू रो कहि देले
इन केस सर जदी सर जूरिस्प्रुडेंस रो जदी माने रिगार्डिंग इंटरव्यू रे पचारंदी सर ताले डाइसी फॉलो करियाटा बेटर हबो के सर एविडेंस आपण दी पढ़ी कि ताको इंटरव्यू रे माने जूरिस्प्रुडेंस कोन ना जनरल जिंस लायबिलिटी कोन ए टाइप रो क्वेश्चन जदी पचरायला केते प्रकार रो लायबिलिटी अछि आपण जानचंदी ए लायबिलिटी भितर डिफरेंस कोन ओके स्यूडो लायबिलिटी काहू को जाए ए टाइप रो जदी क्वेश्चंस पचारिबे आपण कहबे एटा तो मो ऑप्शनल्स रे नहीं तो सेंति कहि परबे ना तो Yes, sir. jurisprudence covers all the basics of law. Anything the study of law is basically the theory of law is jurisprudence. ताको तो जहाँ भी पचारले से हिसाब रे आपण को jurisprudence अंडर रे ही आसी जिवो. yes sir Okay. Majorly पचारंतिनी OJS interview रे at least majorly पचारंतिनी but अलगा domains रे they can ask. Okay, basic जिंस है ना पचारन. yes yes Okay, fine. So any other आपण बुक्स गुडा बुझिले कोन कोन फॉलो करिवे आउ को बुक का पई बेटर तेणु जने जदी टिके माने ना पूरा एग्जाम ओरिएंटेड अछि सी डायस की पैटर्न की हार्ट की सैलमन पढिले ताको टिके असुविधा होई जिवो राइट जे पूरा एग्जैक्टली चाहू छी क्वेश्चन आउ आंसर सेति की पढिबी तले मोकाल करिका दिस आर गुड दिस टाइप ऑफ बुक्स आर गुड रिक्वायरमेंट हिसाब रे आपण को स्टाइल ऑफ स्टडी टा कोन अछि सेटा तो ऑलरेडी वेल फॉर्मड हे जाय छी ना एपे हमें कहबा सेटा चेंज करंतु दैट विल बिकम डिफिकल्ट राइट सो आपण को जहा रिक्वायरमेंट से हिसाब रे देखि की पड़ी ओके सो विल स्टॉप हियर एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट चैप्टर